Hello children, good morning. Myself Karune Singh Badoria. Welcome in physics class. Children, in previous video, uh, I have taken chapter number 3, motion in a straight line. In that topic, in that chapter, I have explained two terms mainly. One was motion and second was rest. And what is the difference between these two terms, motion and rest? So, what was motion? When an object change its position with respect to time, then we can say that that object will be in motion. And if does not change its position with respect to time, then we can say that object is in rest. Okay. Here I am taking next topic, quantity. What is quantity? In chapter number 2, units and measurement, you already seen this chapter, this topic, quantity. So can you tell me what is quantity? Quantity are those which can be measured directly or indirectly. Which can be measured directly or indirectly, that are quantity. क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स. वहाँ मैंने आपको फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव्स क्वांटिटी बताई थी, वो अलग टाइप है. यहाँ हम वेक्टर एंड स्केलर की बात करने वाले हैं. सो क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज. वन स्केलर क्वांटिटीज़ एंड सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज क्वांटिटी एंड देन नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटीज़ are those which can be measured directly or indirectly. Okay. Quantities are those which can be measured directly or indirectly. It is of two types. Number one, scalar quantity. Can you tell me what is scalar quantity? Scalar quantities are those quantities which can be explained with the help of only its magnitude. जिसको explain करने में only magnitude की जरूरत पड़ी है. Those quantities called scalar quantities, है ना? These quantities can explain with the help of only magnitude. Okay, so these quantities called scalar quantity. For example, volume, area, length. इनको एक्सप्लेन करने में आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है. आपको केवल उसका मैग्नीट्यूड चाहिए. Only with the help of magnitude you can explain volume, area and length, etc. So these quantities called scalar quantity. But children, there are so many quantities they cannot explain with the help of only magnitude. The direction should be required to give the explanation of those quantity. So those quantity which can be explained with the help of magnitude as well as direction also.
those quantities called vector quantity. So second quantity, number 2, vector quantity. Okay, in vector quantity these quantities can explain with the help of magnitude, and direction called vector quantity. Okay, example, suppose velocity, we need magnitude as well as direction to explain the velocity. Similarly, acceleration. Okay, so these are vector quantity. So there are two types of quantity, scalar quantity and vector quantity. In scalar quantity we need only its magnitude. With the help of magnitude we can explain these quantities. Okay, but in vector quantities we need two things. One, its magnitude, and its direction also. Without direction or without its magnitude we cannot explain vector quantity. So we need both things, magnitude as well as its direction. Okay, so examples are here, velocity and acceleration. So this is all about quantity. Now I am taking another important topic of this chapter, distance. Distance and displacement. There are two quantities, one displacement and second displacement. So first of all I am taking distance. What is distance? Children, distance means length of path traveled by an object between two points or a given time interval. Okay, this is distance, length of path traveled by an object between 2 points, or we can say length of path traveled by object in a given time interval. गिवन टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट से कितना वो पाथ कवर करता है. सपोज फॉर एग्जांपल a particle or an object moves from A to B through the point C. A से B को मूव करता है, but direction is from first A to C, then C to B. This is the path, A to C, then C to B. So what will be the distance covered by this object? Distance will be, for example, an object move from A to B through point C. A से B जाता है, बट पाथ कौन सा फॉलो करता है? थ्रू पॉइंट C. तो फर्स्ट दिस पार्टिकल विल मूव फ्रॉम A to C, देन C to B.
So the distance will be AC plus CD. This will be distance, means total length followed by the object. Object कितनी लेंथ फॉलो करता है, कितनी लेंथ कवर्ड करता है इन गिवन टाइम इंटरवल. So this object first move from A to C, then C to B. So total distance will be AC plus CD. Clear? This is distance. And children, distance is measured in meter, centimeter, kilometer. So what will be its SI unit? So we can write here SI unit of distance is meter. Okay, SI unit is meter, and it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Clear? So this is all about distance. Now I am taking another topic, not we can say topic, another point: displacement. Displacement. What is displacement? Children, distance will be always positive. Distance तो positive होगी, अगर वो कुछ length follow करेगा तो positive होगी. So distance will be always positive. Now I am coming here at displacement. What is displacement? Displacement is the shortest distance covered by the particle between 2 points, initial and final point. एक बार और सुनिए. Displacement is a shortest distance covered by the object between two fixed point. वो fixed point कौन से होंगे? Initial and final. So we can say कि the shortest distance between final and initial point. These two distance between shortest distance कहिए आप इसको. ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप ये डिस्टेंस कवर करें इसको, नहीं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी. दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, फाइनल एंड इनिशियल. इनके बीच की डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. सो राइट हियर the shortest distance covered by object between final and initial point. Between final and initial point. The shortest distance covered by an object between final and initial point is called displacement. Clear? For example, वही एग्जाम्पल में ले रहा हूँ. सपोज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to D, suppose it is C point, then C to B. कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट A to B मूव करता है थ्रू द पॉइंट C. In this case, its displacement will be AB. Displacement will be AB because this is final point, this is initial point.
सो डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, पाथ फॉलोड करेगा वो नहीं, वो डिस्टेंस में चला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच की, दिस। सो लेट ऑब्जेक्ट moves from A to B through point C, then displacement equals to AB, इसका डिस्प्लेसमेंट AB होगा। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों केस यहाँ पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। इट्स एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम, मीटर। एसआई यूनिट इज मीटर। अब ये नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से देखिए। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी एंड जीरो भी। एक एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे। सपोज दिस इज पॉइंट ए, point A, and particle moves A to B in time t1, and this distance is x1. टाइम t1 में A से B x डिस्टेंस कवर करता है। इन सेम पाथ फ्रॉम B to C it take t2 time and this distance is x2 from origin, इसकी डिस्टेंस x2 है ओरिजिन से। अब फाइनली अब मैं बात इसकी करूँ B से C के बीच में डिस्प्लेसमेंट की करूँ, यहाँ तो स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पर था, x इक्वल्स टू 0 था, ठीक है। t1 टाइम पे पार्टिकल यहाँ था, t2 टाइम पे यहाँ था, तो the position of this point is x1, the position of this point is x2, so displacement will be this, and this can be measured x2 minus x1. So यहाँ displacement is x2 minus x1. Here x2 is greater than x1, so x2 minus x1 is greater than 0. अगर x2 minus x1 greater than 0 होता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, x2 minus x1 less than 0 होता है डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, x2 minus x1 equals to 0 होता है डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. सो नोट, if x2 minus x1 is greater than 0 implies that displacement is equals to positive, okay. Displacement is positive, clear. If x2 minus x1 is less than 0, then displacement is negative, displacement will be negative. And if x2 minus x1 equals to 0, then displacement equals to 0. 0 कब हो सकता है? पार्टिकल ए से बी जाता है और बी से वापस ए पे आ जाए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। किसी सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल ए पॉइंट से मूव करता है, एक कंप्लीट राउंड लेके उसी जगह आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. सो इन दैट केस व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, कब 0 होगा? जब पार्टिकल उसी जगह पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, बट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज
पॉजिटिव, नेगेटिव जीरो नहीं हो सकती है। अगर डिस्टेंस जीरो है इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में था, मूवमेंट नहीं हुआ है, उस केस में उसकी डिस्टेंस जीरो मानी जाएगी। और अगर मोशन में है, मूवमेंट किया है, तो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। बट इन डिस्प्लेसमेंट, केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव। ओके, सो इसे नोट कीजिए पहले। यस, हैव यू नोटेड? 1 2 3 नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। So many numericals can be asked from this topic, velocity। छोटी क्लासेस में आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। व्हाट इज वेलोसिटी? कैन यू टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Rate of change of displacement is called velocity, or we can say that in a unit time, total displacement is called velocity. So we can write here it is rate of change of displacement rate of change of displacement is called velocity. Clear? So this is the definition of velocity, denoted by v। v से इसको डिनोट करेंगे। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इट इज a vector quantity। So these are basic things about velocity. It is the rate of change of displacement per unit time। Displacement is called velocity, denoted by v। its SI unit is meter per second and it is a vector quantity। तो ये बेसिक चीज़ें इसमें ये हो गई हैं। अब इसके बारे में और कुछ देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस होता है। इसका डिस्प्लेसमेंट है मान लो 15 मीटर एंड टाइम टेकिंग फ्रॉम ए टू बी इज 5 सेकेंड। सो इट्स वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 15 by 5, दिस विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। ये सिंपल तरीके से आप इसमें आपने देखा। बट here I am taking some different types of velocity। जैसे वेलोसिटी जो है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। ये कुछ अलग टाइप की वेलोसिटी है, उनके बारे में हम देख रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स types of velocity। Number one is constant velocity। What is constant velocity? If an object is moving or covered a fixed displacement in a fixed time, suppose object moves from A to B, then B to
t equals to, suppose it is t1, and displacement d equals to x, d1 equals to x, या d equals to x1, t equals to t2, time between b to c, displacement equals to x2. If x1 टाइम भी सेम करो, t1 इक्वल्स टू t2, देन x1 इक्वल्स टू x2, x1 इक्वल्स टू x2. इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर होता है, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. सो वी कैन राइट हियर, इफ एन ऑब्जेक्ट cover equal displacement in equal time, then its velocity will be constant. क्लियर. इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, देन इट्स वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट वेलोसिटी. और जस्ट इसका एक उल्टा, वेरिएबल वेलोसिटी. नंबर 2 वेरिएबल वेलोसिटी, तो इसका रिवर्स कर दीजिए. क्या होगा इसमें वेरिएबल में? यहाँ जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, वहाँ बोलेंगे इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट. इफ एन ऑब्जेक्ट, इसमें लिखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिफरेंट, अनइक्वल कर दो, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन it will be in variable velocity, then its velocity will be variable. Clear? So constant velocity and variable velocity. Number 3, average velocity. Average velocity means, suppose particle or object is moving from A to B, time taken from A to B is t1, and displacement is, suppose it is d1, then it moves from B to C in same path, C, B to C time taken t2, displacement is, suppose it is d2. Unequal displacement, unequal time. So average velocity, V average, is equals to total displacement d1 plus d2 upon total time taken t1 plus t2. This will be average velocity. So how can we explain this average velocity? It is the ratio of total displacement to the total time taken by an object. Clear? So we can write here average velocity is the ratio of total displacement taken by
an object to total time. Average velocity is the ratio of total displacement taken by an object to the total time. So average velocity, this is the formula denoted by V average. Clear? Denoted by V average. Now last, number 4, instantaneous velocity. Instantaneous velocity means velocity of an object at a particular moment. Velocity of an object at a particular time. ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम की जो वेलोसिटी होती है दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी VINS इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा d अपॉन डेल्टा t. इट इज रिटन एज डेल्टा s कर दीजिए, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t ds बाई dt. पर्टिकुलर मोमेंट when डेल्टा t टेंड्स टू 0 पर, डेल्टा 2 टेंड्स टू 0 पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंड इट इज डिनोटेड बाय ds बाई dt. क्लियर? So this is all about velocity. Okay, चिल्ड्रन.